today's session is the previous year question paper, and that too specifically from 2021. We have selected the question paper so that you can have a hold of the question paper and the type of questions that will be coming in your forthcoming CTET 2023 exam. Okay, I hope you all are doing well and you are preparing for your CTET exam, and that everyone here who are watching the session, I hope that each and everyone is a B.Ed and D.El.Ed qualified teacher, and because he or she has undergone this course, that means that you are qualified for the post, and there are this is just a minimal barrier of CTET, and that is you need to just qualify the exam. And for qualifying the exam, I hope that each and everyone will qualify the exam very easily only when one follows the principles, one follows the habits that we discuss here, we motivate here, and these kind of principles and habits, if you are following, then surely and certainly you are going to clear your CTET exam. Okay, let's start the session. So today's session is on, as I've said, the previous year question paper discussion from your 2021 question paper, and let's discuss the questions from CDP. Okay, that is child development and pedagogy. Question number 1, we can see here, it is the question paper. Actually, the questions are very much relational, we can say, are very much where we can actually interpret the question if we relate the question with our lives and with the principles that are taught in the CDP paper. Okay, so for that, what we need to know, the basic qualification for a teacher is to understand the student. And once the relationship between the teacher and the student is clear and it is interactive, the teacher will understand the student, and the student will also try to express his inner feelings, inner doubts with his teacher. And in that way, the bonding between the teacher and the student is going to be a strong bond. And in that way, the teaching learning process is going to give fruitful results. Okay, let's start. Question number 1. In order to address learners from diverse background, a teacher should. Okay, now when a teacher is actually trying to address students from diverse background, or we can say students from different backgrounds, what a teacher should do. So the examples, the options, we need to try to understand the options and read the options thoroughly. Use standardized assessment for all. Here, that means, what is the assessment process? It should be standardized, or we can say the fixed standard that we should maintain while assessing or evaluation. Use statements that strengthen negative stereotypes. See, now here the question, it is given strengthen negative stereotypes. So this is something which is humiliating, or it is something which has some negative effects upon the child. So this is not going to be any of the answer related with education. Then avoid talking about aspects related to diversity. Now, when we are not speaking about diversity, then how can we bring the diverse elements of the children? Yes, and how can we discuss about the diverse potential about the children? So, in order to deal with the diversity, we need to know the diverse effects, the diverse potential, the diverse spheres of education and their implication. So this is also something which is not, because here it is asked that avoid thinking or avoid talking about that. Yes. Next we have the last one, draw examples from diverse settings. Yes. Now, drawing examples from diverse settings, yes, to some extent it is going to help us to relate with the students' diverse potential and diversifying students' ability. So, the correct answer is D, because the other three options are very much fixed and it has negative impacts upon the child.
Okay, hope this is clear for everyone that question number 1, if it is discussed about the diverse backgrounds, we need to know about the diverse settings. So diverse settings, diverse backgrounds, okay, from learners from diverse backgrounds, okay. Next, question number 2, problem solving abilities can be facilitated by. Now see, when a teacher is actually trying to teach a concept to the student, he or she needs to imply some of the problems, some of the questions which needs the student's understanding. The student need to understand the concept and apply whatever he understood while solving the questions or the problems. So that kind of a scene or scenario can be helpful only when we apply, can be facilitated. Okay, facilitated means can be made helpful or it can be made open up to everyone only by following which strategy. So number A is encouraging use of analogies. Yes, it is to some extent. Analogies mean some kind of similar relations. Then we have generating fear among the students. Now see, when we are actually a teacher, if we are generating fear, this is not going to be a valuable, or we can say an effective teaching learning process. So this is not going to be any of the criteria. Then focusing on drill and practice. Yes, but drill and practice is something which is related to our sports category. And here we are speaking about the conceptual understanding. So drill and practice is something which is an extended part of teaching learning process. And encouraging fixed process of solving the problem. Now see, when we are speaking about fixed process, that implies that fixed means where the student cannot imply any of his potential on any of his creativity. So when it is the responsibility of the teacher that when the student is trying to apply his creativity while solving a problem, that should be actually appraised, or we can say that should be actually encouraged by the teacher. So fixed solutions is not going to help us in case of problem solving. So we will go with the option A, that is encouraging use of analogies, and other options are not actually depicting any of the strategies to follow the problem solving category. Yes, let's move on to the next question. Hope till here it is clear. Question number 3. In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not. Okay, now see, a lot of students in the classroom will face, actually they surely and certainly face problem in learning. So these are learning difficulties. So in order to solve the learning difficulties of the student, what the teacher should do and what the teacher should not do. Now the question is very important here. So the not is to be read properly. सो हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं, ये नॉट को या फिर क्वेश्चन को एफर्मेटिव हिसाब से पढ़ लेते हैं और उसी हिसाब से सोच के आंसर क्लिक कर देते हैं. So because the exam is going to be conducted CBT based, that means computer based test is going to be conducted for your upcoming CTET exam. आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़े. तो यहाँ पे कोई भी अगर सेंटेंस में, कोई भी अगर क्वेश्चन में नॉट दिया जाए और नहीं तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहे, तो ऐसे हाल में क्वेश्चन को और ऑप्शंस को पढ़ने का जिम्मेदारी आपका है. Because you are going to feel nervous at that kind of a situation, and that is on your hand, or it is on your responsibility how you tackle the situation. तो none of these होने से भी एक बहुत सा डर और भय भाव होता है कि none of these options में अगर है तो बाकी 3 ऑप्शन होंगे या नहीं होंगे.
So none of these, all of these kind of option is actually fearing or confusing for the student or for the aspirant. तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में अगर नॉट रहे तो ये तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये नॉट को पढ़ते नहीं है, और अगर पढ़ते भी है तो अप्लाई नहीं करते हैं जब क्वेश्चन के ऑप्शंस ढूंढते हैं. So we have the general tendency to read the question as affirmative. So affirmative question पढ़ते पढ़ते हम लोगों को negative question पढ़ने का आदत नहीं है, और इसीलिए affirmative question या negative question को भी affirmative से ही हम पकड़ लेते हैं. तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है. Okay? So here the teacher is not going to deal any of these. So which one is not to be followed or practiced by the teacher? So do individualized educational planning. So individualized educational planning is the emphasis. So एक एक बच्चे को अगर individual planning से पढ़ाए तो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. Okay, so not is there, be careful. Then let's move on. Practice rigid structure of pedagogy and assessment. तो रिजिड स्ट्रक्चर तो हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, बिकॉज रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पेडागॉजी इज नॉट गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन केस ऑफ लर्निंग. सो हम लोगों को पेडागॉजी में जितना भी समझाया जाता है, दैट इज द बेसिक थिंग. But when we are dealing with actual practical problems and issues of the student, we need to go out of the boundary. तो हम लोगों को बाउंड्री क्रॉस करके बच्चों को समझना है, उन लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना है, और उन लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है. तो वी नीड टू बी आउट ऑफ द बाउंड्रीज, और वी नीड टू ब्रेक द डोमेन्स ऑफ द फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो what we need to do, so here the question is not, again यहाँ पे क्या है, rigid structure नहीं follow करना है. So then use multiple audio visual aids. So multiple audio visual aids we used to follow. So we follow actually a lot of audio as well as visual aids in order to understand and go deeper into the problems of the student. हम लोगों को audio visual aids जो करते हैं, जो अप्लाई करते हैं बच्चों को समझने के लिए. Then use constructive pedagogical approaches. तो use हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये भी अप्लाई करते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्टिविस्ट ideology or principle of learning is very helpful, because it is the modern approach to understanding and teaching learning process. तो ये दो अप्लाई कर सकते हैं. कौन सा नहीं कर सकते, तो बाकी ये दोनों में डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर. तो अ टीचर शुड नॉट अप्लाई इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग, तो थोड़ा बहुत होता है. And then I have not given 2 clicks. And then practice rigid structures. So this one is the answer. तो ये हम लोग follow नहीं कर सकते. And that's why for a teacher, the correct answer for this question is practicing rigid practice or rigid pedagogical approaches. Yes? Okay, hope this is clear. तो हम लोग phase wise या अंडरस्टैंडिंग के जो फेजेस होते हैं उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और उसको समझ के ऑप्शंस क्लिक कर रहे हैं. सो दिस इज टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट इफ यू आर preparing for your exam in a very stipulated time, you need to make a proper time management scheme. आप लोगों को questions जब mock test, हम लोगों के यहाँ पे क्या है, बीपीएस में हम लोग एक 1 जुलाई से पेड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट के लिए. और आप लोगों को अगर ये क्लासेस के क्वालिटी जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप लोगों को क्वालिटी थोड़ा बहुत यूनिक एंड डिफरेंट लगे, एंड यू आर feeling that the classes are actually very much in an improved state, so then you can like, share and subscribe our channel
in order to follow us with a minimal amount. So minimal amount of fees is very less. Do inquire, because the link which is given below, so you can go through the link. तो डेली हम लोगों का यहाँ पे 3 बजे क्लासेस होते हैं सीटेट, और जब हम लोग पेड क्लासेस देंगे उस हिसाब से हम शाम को पेड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 7, एंड फ्रॉम 7 अगर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी अगर एस्पिरेंट, दैट मीन्स कोई भी प्रार्थी अगर कोई किसी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है या प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सीटेट के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द क्लासेस इन द लेटर हाफ ऑफ इवनिंग. So that is the time where you can relax and settle down and learn something new. So I insist that if you are liking, if you are watching the channel and if you are watching the sessions, do like, share and subscribe our channel. Okay. Let's move on to the next question. Question number 4. Dash is the primary identifying feature of creativity. Okay. Now, when we are speaking about creativity, we need to know that creativity is nothing else but the diverse thinking process where we apply our intelligence, our understanding, and at the same time our cognition. Yes. तो यहाँ पे क्या है? Which one is the primary identifying feature? So hyperactivity is something which is related with ADHD. So that is attention deficit hyperactivity disorder. So hyperactivity is something which is a psychological disorder, or we can say a issue. Next, we have inattentiveness. This is not, because to become creative, we need to be attentive. Low comprehension. Comprehension अगर low होगा तो कैसे creative होंगे? And divergent thinking. Divergent thinking implies that a student or a person is thinking into diverse facets or diverse phases. And when he or she is thinking into the diversifying of knowledge, he or she can inculcate some new things, certain creativity, certain potential can be applied and can be improved. So the correct answer is divergent thinking. Okay. Let's move on to question number 5. Which of the following is most effective mode of teaching and learning? So teaching and learning के लिए ये बहुत ही आसान से questions है. यहाँ पे question का जो pattern है, we can say that from easy to moderate you are going to get the questions for your CTET, and no need to fear. आप लोगों को डरने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो questions है उनके लेवल्स इजी से मॉडरेट है, एंड बिकॉज द क्वेश्चन, द एग्जाम इज एक्चुअली अ क्वालिफाइंग एग्जाम, सो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा अगर आप लोग हम लोगों को फॉलो करते रहे बीपीएस सीटेट में. तो यहाँ पे जो हम लोग का बीपीएस सीयूईटी चैनल है उसी में हम लोग सीटेट पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे ही हम लोग पेड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. So which one is the most effective mode of teaching and learning? Observation without analysis. अगर ऑब्जर्व ही करना है और एनालाइज नहीं करना है तो कैसे हेल्पफुल होगा? सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. इमिटेशन एंड रिपीटिशन. इमिटेट और रिपीट करने से कुछ हद तक हम लोग सीख सकते हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग रन. यस. Next, rote memorization of content. Rote memorization means memorize करना. तो memorization a concept, अगर आप memorize भी कर ले तो वो आगे जाके आपको help नहीं करने वाला है. तो rote memorization is also not applicable. Last one, let's see. ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शंस पढ़ लिए, कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो तभी क्या करना है? नन ऑफ दीज ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा. अगर वो भी नहीं है तो आपको समझना है कि चारों ऑप्शंस के अंदर किसी ना किसी एक ऑप्शन में थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस आंसर के तरफ होगा, क्वेश्चन के तरफ होगा, तो उसी को क्लिक करना है. ओके. Exploration of relationship between concepts. So this is the correct answer, because here we can apply that
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी हेल्पफुल ओनली व्हेन वी एक्सप्लोर. अगर हम लोग एक्सप्लोर करें नए नए तरीके, नए नए कंसेप्ट्स, और नहीं तो नए नए अप्लाइंग और एग्जीक्यूटिंग मोड्स, तभी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस हेल्पफुल या फ्रूटफुल होगा. ओके, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ओके, hope you all have understood. Yes, next let's move on to the next question. Question number 6. A teacher should analyze the various errors made by student on a given task because, now see, अभी टीचर का दायित्व क्या है? He need to analyze the various errors made by the student. तो errors अगर हम लोगों को ढूंढना है और समझना है by the students on a given task, so let's read the option. She can segregate those who made more errors in comparison to others. Let's read the option. A teacher should analyze the various errors made by student on a given task because she can segregate those who made more errors. Learning is solely based on correction errors. Yes, to some extent. She can decide degree of punishment. Punishment जहां पे भी होगा, वो corporal हो या simple हो, आपको cross देना है. Understanding of errors are meaningful in the teaching learning process. So here what we can see that this is the correct answer. Option number D, because the teacher should have the capacity or the caliber to understand the errors, what type of errors and errors are actually meaningful, and how the meaning it can reach to teaching learning process. Yes, मीनिंगफुल भी है एरर्स, और मीनिंग ढूंढ के हम लोगों को उसी को एरर को रिमूव या फिर एरर को एडिट करना या एरर को समझकर उसको सुलझाने का मेन दायित्व है एक टीचर का. ओके, the teacher's responsibility is to understand and identify the error and then try to solve the error. Okay, hope this is clear. Let's move on to question number 7. Motivation to learn can be sustained by. अभी motivation तो होगा ही. मोटिवेशन अगर नहीं भी है तो मोटिवेशन टीचर देते हैं. एक्चुअली टीचर इज नॉट ओनली अ टीचर बट ही और शी इज अ गाइड, a philosopher and a friend. So motivation is actually an included process or inclusive process of teaching and learning, but it can be sustained. sustain करना है मतलब उसको रखना है. तो उसको मोटिवेशन को रखने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं उसको देखते हैं. गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, नो, बिकॉज वैसे हम लोग मोटिवेट नहीं करते. हम लोगों को मोटिवेट करना है तो उसको प्रॉब्लम्स दे के सुलझाने का प्रोसेस सिखाना है, तो उससे हम लोग एक स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, नो. रोट मेमोराइजेशन जब भी रहेगा हम लोगों को उसको डिस्करेज करना है. ओके, पनिशिंग द चाइल्ड, नो. फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, यस. सो हम लोग क्या करेंगे, अगर मोटिवेशन करना है तो मोटिवेशन करने के लिए फोकसिंग ऑन, नो, यस, दिस इज रॉन्ग. सो मोटिवेशन करने के लिए यहाँ पे क्या है, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स. तो कोई ओरिएंटेड, दैट मीन्स इन ऑर्डर टू रीच अ सर्टेन गोल वी नीड टू मास्टर दिस गोल. सो ये गोल को ओरिएंट करने के लिए मोटिवेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन ऑप्ट दैट फोकसिंग ऑन मास्टरी. सो मास्टर, एक ओरिएंटेड गोल के लिए मास्टरी करना है, नहीं तो एक गोल की तरफ, ओके, एक गोल के तरफ केंद्रित होके हम लोगों को समझना है, समझाना है, और उसी गोल के तरफ मोटिवेट करना है कोई एक बच्चे को जो मोटिवेट नहीं हो रहा. तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मोटिवेशन can be sustained only we have some kind of oriented goals. Okay, let's move on to the next question. Question number 8. What is shame? Shame मतलब क्या? Shame मतलब किसी को
डीमोटिवेट करना, नहीं तो किसी को ऐसे एक पर्याय में पहुंचा देना जहाँ पे वो शर्मिंदगी फील करे, तो वो फील नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ बैड इम्पैक्ट अपॉन द learning process. Yes, let's read the options. Is very effective to motivate the children to learn? No, never. Because किसी को shame देके किसी को डिमोटिवेट या फिर लुक डाउन करने से कोई सीखता नहीं है. Next, should be generated frequently in teaching learning process. No. Has no relation to cognition. Yes, it has. Can have negative impact on cognition. This is the correct answer. So shame is what it is going to have negative impact upon the student or cognition. Cognition matlab understanding. Okay. Hope everyone understood. Okay, let's move on to the next question. Question number 9. Constructivist view of learning suggests that children's construction of their own knowledge. अभी क्या है constructivist? Constructivist knowledge was given by Piaget. And this constructivist is something different from the traditional aspect, okay? The traditional teaching of learning is different. So the traditional approach was totally different from the constructivist approach. And the constructivist approach is what? This approach tells that there is a basic structure. Okay? एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस स्ट्रक्चर को एम्पलीफाई करना, नहीं तो इंक्रीज करना ही हम लोगों का दायित्व है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में. सो इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच व्हाट वी लर्न इज दैट द बेसिक ideology, or we can say the basic frame of learning, is already made in the students. We need to construct on above that. So here kya hai? Here the problem is the problem of giving new ideas, new spheres, or we can say new areas of improving or executing the thoughts or whatever you have learned till now. Yes. Next, let's move on to the next. Oh yes, the options. So constructivist में क्या है? Let's read the option. Play an active role in, are solely the children play an active role, are solely dependent on textbooks? No. Have no role to play in? No. Are solely dependent on adults? No. So the correct answer is A, where the students, the children are actually the persons who actually play the role in constructivist. The teacher is only an external factor where the teacher can give the new domains, but the student is the person or the actual medium where he or she needs to develop his ability or his creativity. Yes. Let's move on to the next question now. Question number 10. Which of the following belief is good for learning? अभी ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है. वी आर गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम इजी टू मॉडरेट एंड यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस. आप लोगों का अगर प्रेपरेशंस बहुत ही प्लान्ड है और इट इज अ वेरी बेस्ड ऑन अ रूटीन, तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस इतने टक्कर देने वाले क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं. सो द क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू मॉडरेट, वेयर यू जस्ट नीड टू हैव सम काइंड ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स. ओके, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट इज द बिलीफ. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिलीफ विच इज गुड फॉर लर्निंग. तो ऐसे कौन से बिलीफ, नहीं तो ऐसे कौन से आप लोगों के सोचने का तरीका होना चाहिए जो कि पढ़ाई के लिए अच्छे हो या
अच्छे रिजल्ट्स दे. Okay, efforts don't make any difference nowhere. It's not going to work. Efforts तो काम देंगे ही देंगे, efforts देना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए. Failure is uncontrollable. Yes, failure is uncontrollable, but we can control it to some limit only when हम लोग अच्छे से prepare करें. Next, ability is improvable. Yes, definitely. Definitely, ability is improvable. Ability is fixed, so no. So which belief is good? That ability is improvable. You can improve your ability, your caliber, your capacity. So these are the things which you can see that they will surely and certainly develop if you try to develop. अभी ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट अगर फिक्स्ड है, कोई सोचने का कोई नया चीज नहीं सोचता है, कोई अपने अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो वैसे क्या हो जाएगा? लर्निंग विल बिकम, एबिलिटी विल बिकम फिक्स्ड. So in order to bring out your creativity, your potential, or whatever you have, क्रिएटिविटी अगर नहीं भी हो तो जो भी आप लोगों के इनर थॉट्स है, नहीं तो आप लोगों के इनर क्राइटेरिया है, उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? दैट वी नीड टू बिलीव दैट हम लोगों के बीच कुछ ना कुछ तो अलग है जो किसी के पास नहीं है. तो वो खोज के निकालो और उसी को आपको इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करते जाना है. एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव, और हम लोग उसी को विश्वास रखते हैं कि एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल एंड ऑलवेज इट इज इम्प्रूवेबल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, conceptual understanding. So here what we are getting in question number 11, conceptual understanding among student is likely to improve in the setting which emphasizes on. अभी आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि कंसेप्ट्स में क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या है. Now see, when we are speaking about conceptual understanding, we are speaking about some concepts, okay? Among students is likely to improve. हम अगर conceptual understanding नहीं तो एक fixed understanding को improve करने चाहते हैं students के बीच, तो what we can apply? Frequent examination concepts के लिए तो examination is not actually a solution. Inquiry and dialogue, yes, to some extent. Competition, yes, to some extent, but not definitely. And textbook centric pedagogy, this is not going to work. So A and C के अंदर आप लोगों को सिलेक्ट करना है. तो competition is also not going to be helpful in case of concepts. So when we are going to improve our concepts, only when we inquire, हम लोग तराशते हैं, नहीं तो हम लोग सर्च करते हैं, नहीं तो रिसर्च करते हैं on the basis of the concepts, and only then it's going to be helpful, and the teaching learning process is going to be helpful. And the setting is what? Where the student is researching, he or she is working on the research, and he or she is doing some kind of interaction with the teacher. So we can say research and at the same time interacting with the teacher. Okay, hope this is clear. हम लोगों को conceptual understanding या conceptual learning में क्या basic feature होते हैं. Okay, let's move on to the next question. Question number 12. It is difficult for children to learn when. हम लोग बच्चों के लिए सीखना मुसीबत हो जाता है, नहीं तो तकलीफ होता है. When it is going to be difficult to learn, when learning is socially contextualized. Learning जब हम social व society के base में करते हैं, तो वो क्या है? It's going to be helpful for the student, but it is going to demotivate the student when
कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज. सो ये टू सम एक्सटेंट है. ओके. Information is presented in disconnected chunks. Okay, yes, they are intrinsically motivated. So intrinsic मतलब एक दूसरे के साथ interrelated होना. Okay. So what we can see here is that difficulty can be felt in these two ways, either B or C. The content is represented through multiple ways and information is presented in disconnected chunks. So हम दोनों के बीच कंटेंट को तो थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट हम मल्टीपल वेज में करते भी है, तो डिफिकल्टी होता भी अगर है तो इसके जैसा नहीं होता. तो we will go with the option C, that is information is given in different disconnected chunks. Disconnected मतलब किसी भी कोने से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको समझना है. तो ऐसे में क्या होता है, अगर डिफरेंट कंसेप्ट्स में, एक ही कंसेप्ट में एक कंसेप्ट हो, concept is one and the things which information are diversified. Okay. So when we are getting diversified information, that is not going to help to understand this concept. So that is one of the difficulty faced by the student only when the concept is very much diversified or the information is diversified or disconnected. Yes? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये लॉजिकली हम लोगों को क्या है, क्वेश्चन को समझना है, पहले प्रॉब्लम को रिलेट करना है. वी नीड टू रिलेट आवरसेल्व्स विद द सिचुएशन, व्हाट द स्टूडेंट मे फील इन केस ऑफ दिस सिचुएशन, और द सिचुएशन हम लोगों को, ये क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली एक सिचुएशन क्रिएट होता है और वो सिचुएशन को पहले हम लोगों को समझना है, उसके बाद हम लोगों को अपने आप को उसी सिचुएशन में रिलेट करना है. Only then it's going to help us to understand the situation and then find the solution of the situation. Yes, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, अभी लर्निंग के लिए विच वन इज द बेस्ट स्टेट. अभी स्टेट मतलब यहाँ पे राज्य नहीं समझा रहा है, यहाँ पे एक स्थिति नहीं तो एक अवस्था समझा रहे हैं. तो स्टेट इज हियर द कंडीशन. ओके, so moderate arousal, no fear. yes, moderate arousal जहां पे हम लोग समझ रहे हैं, एंड एक मॉडरेट नहीं तो बैलेंस्ड हिसाब से हम लोग अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं with the perceptions. no arousal, no fear, तो arouse भी नहीं हो रहा है, डर भी नहीं है. हाई अराउजल, हाई फियर. सो अराउजल अगर ज्यादा हो और फियर अगर हो तो क्या होता है, बहुत हाई इंक्रीज होता है, बट एट द सेम टाइम इट्स गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज देयर इज हाई फियर. देन लो अराउजल, हाई फियर. तो लो अराउजल है और फियर भी बहुत ज्यादा है, तो हाई फियर जब भी रहेगा दिस इज क्रॉस. नो फियर के अंदर हम लोगों को सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे क्या है, नो अराउजल, दैट मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. यहाँ पे क्या है, मॉडरेट अराउजल, एंड मॉडरेट अराउजल इज समथिंग विच इज एवरेज. Average, it is seen in average student, and maximum of the students have moderate arousal and they have no fear. That means they don't fear anyone, or fear मतलब यहाँ पे डर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता. तो that is the point where we need to understand the student, where a student is understanding but to a moderate level, or we can say on an average level. Yes, so the correct answer is A. Hope this is clear till here. Let's move on to the next question, question number 14. Individual differences in development of children can be attributed to. अभी प्रत्येक बच्चे, एक एक बच्चे क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके बीच रहते हैं. कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति सेम नहीं होता. हर एक प्राणी, हर एक आदमी अलग अलग होते हैं अपने अपने
ओके। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है, हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग होते हैं, नहीं तो अपने आप में एक डिफरेंस लेकर आते हैं. सो when we can notice that there is some kind of difference, okay. So at that time, when we have individual differences in development of children, which we can attribute to, हम लोग कौन से प्रिंसिपल को एट्रीब्यूट कर सकते हैं जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा अलग अलग है एक दूसरे से. यस, नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे क्या है, हेरिडिटी टू सम एक्सटेंट एंड एनवायरनमेंट इज गोइंग टू अप्लाई. Then we have, but यहाँ पे क्या दिया है, neither and nor दिया है. So this is not going to be the answer, because heredity and environment is actually a factor that influence individual differences among children or among people. Yes. Next we have interplay of heredity and environment. Yes, heredity only, environment only. So these are not. So the correct answer is B. And we will go the interplay of heredity and environment. Heredity मतलब यहाँ पे क्या समझाया है, heredity is nothing but हम लोगों के biological understanding, और नहीं तो family background भी बोल सकते हैं. Okay. Yes, heredity is something which are forefathers. हम लोगों के पूर्वज के जो भी कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, हम लोगों के बीच ऑटोमेटिकली आते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द जीन्स, and that is a factor which can be implying or which depicts heredity. Okay, so let's move on to the next question. Question number 15. During a task, टास्क मतलब कोई भी एक काम दिया गया हो, टीचर अपने बच्चों को कोई एक काम दिया है और उस काम में क्या हो रहा है बच्चों का, यहाँ पे कोई एक प्रत्येक बच्चे को, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को सीटेट में मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, इनपुट टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, लेट्स हेल्प. So this is one of the input text based question. Okay, so Anna is talking to herself about okay. Anna is talking to herself about the ways she can proceed on the task. So कोई एक टास्क दिया गया है, टीचर अपने बच्चों को कोई एक काम दिया गया है, कोई एक प्रोजेक्ट, नहीं तो कोई एक प्रश्न, नहीं तो कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने दिए हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एना क्या कर रही है, शी इज टॉकिंग टू हरसेल्फ, अपने आप ही बात कर रहे हैं, अपने आप अपने मन के बीच ही कोई बात कर रहा है. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू वॉट्सकी आइडिया ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट. सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, हम लोगों को पढ़ना ही है, क्या पढ़ना है हम लोगों को, पियाजे पढ़ना है, कोलबर्ग पढ़ना है और वॉट्सकी पढ़ना है. तो वॉट्सकी में हम लोगों को क्या है, लैंग्वेज एंड लर्निंग. सो लेव वॉट्सकी हैज गिवन हिज अप्रोच ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग. लैंग्वेज एंड लर्निंग के आइडियाज दिए गए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू वॉट्सकी आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच एक्चुअली क्या है. प्राइवेट स्पीच, अभी एना क्या कर रही है, किसी एक प्रॉब्लम दिया गया है और वो अपने आप ही बड़बड़ कर रही है, बातें कर रही है.
So that is actually a private speech. That means she is talking to herself. So this process, when he or she, और अगर मैं नहीं तो आप बात करते हैं अपने आप से, तो that is called private speech. And private speech is one of the factor of regulating our own thoughts and our actions. तो हम अपने थॉट्स को रेगुलेट करना चाहते हैं, और नहीं तो हम लोग अपने मन में जो भी सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस, और नहीं तो उसको रेगुलेट, और नहीं तो उसको एक सीधे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्राइवेट स्पीच बोलते हैं. So that is one of the psychological factor which helps us for self-regulation. So what is this? This is a sign of what? Is it egocentrism? Egocentrism में क्या होता है? When we are only self-centered, or we can say that we are very much concerned about our own ideas, about our own needs, about our own thoughts. So that is egocentrism. तो यहाँ पे क्या है? कोई एक प्रश्न दिया गया है, आपको याद रखना है. प्रश्न को सॉल्व करना है, और वही है टास्क गिवन बाय द टीचर. सो यहाँ पे एना क्या कर रही है? वो प्रश्न को सुलझाते सुलझाते अपने आप से बात कर रही है, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. सो this is nowhere a psychological disorder. Egocentrism, yes, when is self-centered. Cognitive immaturity matlab no learning, or we can say learning immaturity. एंड द करेक्ट आंसर इज सेल्फ रेगुलेशन. तो आप लोगों को जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट स्पीच, और वी कैन से टॉकिंग टू वन सेल्फ, वी विल रिलेट टू दिस एज सेल्फ रेगुलेशन. यस, होप दिस इज क्लियर. Let's move on to the next question. Please read the question. Now, evaluation process should aim on what? So evaluation matlab examination. Yes, to conduct any kind of exam. So evaluation is nothing but it's examination. Okay, then हम लोगों को क्या समझना है? यहाँ पे इवैल्यूएशन में क्या दिया गया है, प्लीज आप चेक कीजिए. সিনেমা কিবা ফ্লাকচুয়েট হৈ আছে, মানে নেটটো বাৰে বাৰে মেছেজ আহি আছে, অৰেঞ্জ কালাৰ, উপছ দা ইন কানেকশ্যন কিবা কিবা আহি আছে. খাবলৈ যাব ওলাইছিলে নেকি? চোৱাচোন, বাৰে বাৰে মেছেজ আহি আছে. হৈছে নে নাই ক্লাছটো? নাই হোৱা. Oops, seems like one of the stream is having conditional issues. মানে মাঝে মাঝে অফলাইন হয়ে গেছে, নেট কিবার কারণে হয়েছে, ইয়ার একটু বেয়া হয়, মানে নেট তো মাঝে কোন হয়ে যায়, চলি আছে ন? চলি আছে. Okay, now see, when we are speaking about evaluation, that means it implies or it depicts examination process. So examination process and examination practices should aim at, that means it aims on identifying students' needs and requirements, yes, to some extent. Identification of high achievers for prize distribution, no. So ये क्या करता है? High achievers को ये segregate कर देते हैं क्लास को. तो वैसे हम लोग as a teacher we are not going to segregate the class into high achievers, medium achievers, low achievers. So that is something which is very much we can say
a kind of a discouraging factor of a teacher. And being teacher, आप लोगों को कैसे philosophy maintain करना है, कैसा एक principle जहाँ पे हम अपने सारे बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को एक समझते हैं. Okay, even if he or she is different from each and everyone, still we need to feel or we need to behave that each and everyone is equal to us. Okay, so then we have labeling the student. Yes, labeling कर सकते हैं, but it's not going to help us with the help of exams. हम लोग label नहीं करना चाहते हैं. Segregation of students for ability based. अब लोग हम जब identification is nothing else but segregation. Segregation मतलब parts बनाना है. Okay, तो segregating means dividing. So dividing the class is important, but with the help of examination and as a teacher to label them is not the correct way. Okay, so we will go with option number A, and that is identifying students' needs and their requirements. So कोई अगर बच्चा नहीं क्लियर कर पा रहा है, नहीं मार्क्स कैरी कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है, और उसको समझने के लिए टीचर का responsibility है that he or she should understand what are the problems and how to solve the problem, that why he or she is not trying to, or why he or she is not able to carry good marks. Okay, let's move on to the next question. Question number 17. After observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide clues and hints in forms of what, why and how. तो समझ लीजिए ये एक इनपुट टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या है, टीचर ने एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स को आंसर करने के लिए. So when the students are very confused, कौन सा आंसर होगा, कौन सा स्टार्ट होगा, कहाँ से इंट्रोडक्शन देंगे, बॉडी देंगे, कंक्लूजन देंगे, तभी टीचर ने थोड़ा बहुत क्लू एंड हिंट दे दिया. ओके, क्लूज एंड हिंट्स, दैट व्हाट, व्हाई एंड हाउ इस फॉर्म में लिखना है. तो क्यों हुआ, मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, कोई भी एक सिचुएशन, जस्ट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ओके, तो अगर हम देख रहे हैं कि ऐसा एक हिंट दिया गया है, so according to Watsky's theory, this strategy of teacher is what? So when we are speaking about Watsky and Watsky's understanding, that is the understanding of language and cognition, हम लोग समझते हैं कि that is one of the help that the student is getting from the teacher. So that is one of the process where the student is getting outside external help in order to crack the answer or give the answer. So that is a process of scaffolding of learning. Okay, so that is the process of scaffold learning. And this is given by, this approach was given by Watsky. Okay, cause withdrawal tendency, no. Be meaningless in process of learning, meaningless कैसे हो सकता है, meaningful होगा. Demotivate the children, no. Act as a scaffolding for learning, yes, because hints, नहीं तो hints or help is what? It is a process of scaffolding the student or scaffolding learning by, this approach was given by whom? Watsky. Okay, let's move on to the next question. Question number 18. After getting hurt during a play activity, Rohan started crying. Seeing this, father responded, "Don't behave like girls. Boys don't cry." This statement by the father. Now this is a statement, or we can see this is an input text based question which is actually based on gender centrism, or we can say male centric, or we can say patriarchy in the society. So this implies to our Indian society where we can say patriarchy is there. मतलब यहाँ पे
पेट्रिक, नहीं तो हम लोग जो फादर के तरफ से वो कंसेप्ट है उसे बोलते हैं पेट्रियार्की। नेक्स्ट वी हैव जेंडर सेंट्रिज्म और जेंडर बायस। Okay, so these are the concepts which is implied in this statement given by the father. कि आप रो नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते? अगर आपको हर्ट भी हुआ है, कहीं पे चोट भी हुआ मिला है, तो भी आप नहीं रो सकते क्योंकि आप एक लड़का हो। So that is something which is very stereotypical. Okay. So these are the concepts which we need to negate. मतलब हम ये ऐसे comments को, ऐसे statements को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं और नहीं देना चाहिए हम लोग के सोसाइटी में, अगर हम लोग एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी चाहते हैं तो। So what are the factors? Reduce gender bias. This statement by the father is to reduce gender bias? No, never, because it is actually a gender based question or gender based statement. Promotes gender equality? How? यहाँ पे तो gender equality है ही नहीं. Reflects gender stereotype? Yes, okay, because this is stereotype and that too gender stereotype. लास्ट challenges gender stereotype. So यहाँ पे कोई challenge नहीं दे रहा है. This is just a statement. And so we will move on with the option C because this statement is something which is gender biased, or we can say gender stereotype. Okay, let's move on to the next question. Question number 19. In a progressive classroom. So progressive classroom, this is a concept. Progressive matlab modern, which is different from traditional. Okay. So progressive classroom में क्या होता है, जहाँ पे हम लोग नए नए इवॉल्विंग थॉट्स, ग्रेजुअल थॉट्स को इम्बाइब करते हैं हम लोगों के क्लासेस में, और वही स्टूडेंट्स के पास ऑटोमेटिकली जाता है. So in a progressive classroom, what we have? Ample opportunities should be provided for construction of knowledge. Yes, very good. Students should be labeled on the basis of their academic scores? No. A teacher should follow fixed curriculum? No. यहाँ पे fixed curriculum होने से क्या होता है, बच्चे लोग एक fixed domain में सोचते हैं, एक fixed domain में समझते हैं, and ultimately उसी fixed domain के अंतर्गत वो लोग अपने कार्य करते हैं. So fixed curriculum is not going to help us. Okay. Emphasis should be given on competition. Competition हम लोग बढ़ावा नहीं देते. We are not encouraging competition here as teachers. And so it should be remembered that competition is totally a negative activity or negative, it has a negative impact upon the students. And so we are not going to encourage competition in a classroom. Okay. Let's move on to the next question. Question number 20. क्योंकि अभी क्या है, हम लोग को 1 घंटा मिलता है आप लोगों के क्लास में. वैसे तो मैंने बहुत सारे बाकी क्वेश्चंस किए हैं, तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ जो आप लोग खुद एज होमवर्क कर सकते हैं. बट वी आर जितना भी हो सके 1 घंटे के अंदर मैं डिस्कस कर रही हूँ. ओके. अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, ना कोहलबर्ग ने क्या दिया है, मॉरल अप्रोच ऑफ learning, and he has said that performing an act, कोई भी अगर कार्य आप कर रहे हैं, and doing something because others approve it, आप कोई अपने आप से कर रहे हैं और दूसरा एक काम कार्य कर रहे हैं जो दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, ये नहीं तो दूसरे अप्रूव कर रहे हैं कि आप ये कार्य करो, तो ये दोनों में क्या है, there is a clash of moral understanding. So this concept of moral understanding was given by Kohlberg, and he said that there are 3 stages of morality. Okay. तो ये आप लोगों को याद रखना है. First one is the pre-conventional.
Then is the conventional. And the third one is post-conventional. अभी ये जो 3 स्टेजेस है, इस स्टेज में यहाँ पे जो अप्रूव दिया है, पहले हम लोग समझ लेते हैं what are the 3 stages. So in this 3 stage what we understand is that in the first stage pre-conventional, यहाँ पे क्या है, हम लोग कोई भी एक स्थिति को, नहीं तो कोई एक सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं. ओके, trying to avoid. Next we have conventional. Conventional matlab fixed. So when we are behaving on fixed principles given by the society, तो वो होता है conventional. And the third one is post conventional. That means we are moving apart from the conventions. नहीं तो हम लोग अपने आप से व्यवहार कर रहे हैं according to our society or according to our own beliefs. According to your own beliefs. So यहाँ पे जो question दिया गया है, that performing an act and approving that from others. कोई भी अब कार्य कर रहे हैं और वो अप्रूव हो रहे हैं किसी और के, कोई दूसरा इसको अप्रूव कर रहा है और दूसरा अप्रूव किया तो इसीलिए आपने वो कार्य की, तो वो किस में जाएगा? आप थोड़ा सोचिए. Is it pre-conventional, conventional or post-conventional? So definitely it's going to be the fixed manners, and that is, we can say, the conventional stage of morality. Okay, hope this is clear. थोड़ा बहुत आप लोग को logically सोचना पड़ेगा. You need to think logically. Okay, so the other questions, let me give you these are the question which is left for discussion. So if you need to understand this, just go through the link, go through the session and do read the questions. Okay, okay, now these are the questions which we will discuss later on, but you can prepare this as homework so that you can give me the answers in the next session. Okay, thank you for watching me throughout the session, and hope you all join me in the next class, that is day after tomorrow at 3 p.m. where I will be discussing the previous year question paper based on this, and the previous year question paper from the English section, and we will discuss a little bit of concepts related with English. Okay, hope you all join me in the next session.